Hello everyone, welcome to our video today on transformation and how to transform the energy of laziness to dynamism. Now when we talk about laziness is actually of three types. Okay, one is physical laziness. The second type is called as the emotional laziness. Or third type of laziness, it is called as mental laziness. सो लेजीनेस कैन एक्चुअली बी ऑन 3 लेवल्स और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है दैट लेजीनेस जो है एक लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है बट ऑन द अदर लेवल देयर इज अ लॉट ऑफ लेजीनेस. सो समटाइम्स वी फील कि एम आई रियली लेजी और व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड. तो एक कन्फ्यूजन सा दिमाग में रहता है कि क्या मैं सच में लेजी हूँ या नहीं हूँ. एंड देन देयर इज वी रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. सो इन टुडेज डिस्कशन we will go a little bit in detail to understand these three different types of laziness. So first, let us talk about physical laziness. So when we talk about physical laziness is the very common laziness जो हम लोग को अक्सर पता है, जिसमें physical body lazy रहता है. आपको कुछ काम करने की इच्छा है, मन में इच्छा है, but your body is not supporting. You're not being able to move your body. Your mind is saying कि नहीं मुझे करना है. You really want to do it, but your body is like नहीं अभी नहीं करते हैं. And it's like एकदम desire है, करने की इच्छा है, but the body just doesn't want to move. The body is difficult, the physical body. Psychologically, you want to do the work. Mentally, you're inspired to do the work. Emotionally, also, you're inspired to do the work. आपकी इच्छा है करने की, लेकिन क्या हो रहा है कि physical body support नहीं कर रहा है. This often happens in situations like आप चाह रहे हैं कि आपको exercise करनी है, लेकिन body नहीं करना चाह रहा है. So this is like a classic example of physical laziness. आपको कहीं पर बाहर जाकर के कुछ काम करना है. Mentally, you know what you need to do. Emotionally also you are excited to do it. But physically, suddenly you feel कि oh my god इतना जाना पड़ेगा, बाद में जाते हैं, देखा जाएगा, and then you tend to procrastinate. So this is basically an example of the laziness on the physical level. Very much on the physical level. I'm not going to talk so much about it because we often relate to this. हम लोग सिर्फ फिजिकल वाला ज़्यादा रिलेट करते हैं या ज़्यादा समझते हैं. आज हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे अबाउट इमोशनल एंड मेंटल लेजीनेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल लेजीनेस? इमोशनल लेजीनेस मीन्स नॉट गिविंग आवर 100%, नॉट डूइंग थिंग्स फुल हार्टेडली. यानी कि काम तो हम कर रहे हैं लेकिन टिक मार्क एक्टिविटी कर रहे हैं, पूरा दिल से नहीं कर रहे हैं. This is laziness, little bit of laziness on the emotional level. Like you know that you have to do this job and you are doing this job. So physically you're moving. Physically आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन you're not putting in that same enthusiasm, that same joy, that same excitement, that same happiness in that job. And you are moving physically. Physically आप उसे कर रहे हैं, but emotionally you're not being able to uplift your energy. So this is an example of emotional laziness where you know that you have to do it and your physical body is doing it, but your emotional body or your emotions are not really giving its 100%. It is उसमें थोड़ी सी वो काट कसर कर रहा है emotionally. वो बोलते ना हम लोग, hey, don't do things half-heartedly. So doing things half-heartedly is also an example of emotional laziness. Doing things like a tick mark कि हो गया, अब कैसे हुआ, ठीक से हुआ कि नहीं. Now one way to realize this is also, आप देखेंगे अक्सर अगर हम लोग कोई एक काम नया शुरू करते हैं, when people start the work they are very excited about it, they are very enthusiastic about it and they really want to do it. But जब 5 बार कर चुके होते हैं, 10 बार कर चुके होते हैं, when you do it repeatedly, there are very few people who will be able to maintain the same kind of emotional excitement for that same job. So बहुत लोग करते हैं तो उसे हाँ ये तो कर रहे हैं, and then you start doing things in a tick mark way. So यहाँ पर धीरे धीरे क्या आ गया, इमोशनल लेजीनेस आ गया. लाइक नया जब काम कर रहे थे तो एक स्माइल के साथ कर रहे थे, एक्साइटमेंट के साथ कर रहे थे, एंथुजियाज्म के साथ कर रहे थे, बट नाउ यू आर काइंड ऑफ डूइंग टिक मार्क एक्टिविटीज. द मोमेंट यू गेट इनटू टिक मार्क एक्टिविटीज, इमोशनली यू आर नॉट पुटिंग इन इनफ एनर्जी. यानी कि उसके अंदर आप हैप्पीनेस की, जॉय की, एक्साइटमेंट की, एंथुजियाज्म की जो एनर्जी पहले जा रही थी वो जानी बंद हो गई.
ना, क्योंकि वो एनर्जी जानी बंद हो जाती है या कम हो जाती है, सो धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग को उस प्रोजेक्ट से या उस काम से जो फल मिलना चाहिए, वी डोंट गेट desired results or equal results on how we started. I've often seen people, they say कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, शुरुआत में तो हमको बहुत रिजल्ट मिला, लेकिन अब हमको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. Why? One of the reasons is emotional laziness also. How come we are not feeling excited enough? Simply because we have done something 4 times, 5 times, 10 times. Another name to this also that can be given is the energy of boredom. We get bored of it. So when we get bored of it, then again we have started doing things in a tick mark way. So क्योंकि हम बोर हो रहे हैं तो हम लोग इक्वल एक्साइटमेंट के साथ एक इमोशनल एनर्जी जो डालनी है उस प्रोजेक्ट में, वो एनर्जी हम नहीं डाल पा रहे हैं. क्योंकि वो एनर्जी नहीं डाल पा रहे हैं, it will really hamper our results. I will just share an example. So I'm a pranic healing instructor, and as a pranic healing instructor, every weekend, back to back, we take a lot of classes. So initially, when I was a new instructor, for about a year or two, you're very enthusiastic about it, very excited about it. So there was one class where emotionally I was not feeling very up to it. I was not feeling very excited about it because it had kind of become very monotonous that I'm talking about the same thing every class. So उस class के लिए थोड़ा सा अंदर से जो एक सेम एंथुजियाज्म या मोटिवेशन था पहले, वो मोटिवेशन मुझे उतना फील नहीं हो रहा था. एंड दैट क्लास एक्चुअली was one of the worst classes that I can think of. And I was just reflecting that why did it happen? Why did the students not enjoy? Why did the students did not move ahead for the next classes? Why did they not enjoy the class? And when I reflected, when I looked at myself within, the students didn't enjoy because I was not enjoying. So my friends, if we are in business, if you are at a stage where you are not enjoying your business, will people enjoy your product? One of the reasons why big companies, they are so motivated with their products, they are so excited about their products, they are so motivated, excited about whatever they do, and that is why even people feel excited about their products. Like the example which I can give is of maybe Apple products, like Steve Jobs. The way he would give presentations and the way he would launch a product with so much enthusiasm, motivation, excitement, कि हर आदमी को वही थॉट फील होने लगता है कि वाह व्हाट अ प्रोडक्ट, बिकॉज दैट एनर्जी इज बीन पुट इन दैट प्रोडक्ट. This thing is not just for your business, but it also manifests in our day-to-day life. Even if you're a homemaker, आप जो भी काम कर रहे हैं, एक है कि आप एक रूटीन की तरह टिक मार्क करते जा रहे हैं, दूसरा है कि you are putting lot of love, lot of excitement, lot of enthusiasm, motivation into every little act that you do. And that is a sign of not being emotionally lazy. ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते, बस ऐसे लगता है कि वह क्यों इतना करें. It's just स्माइल भी कभी कभी लोग करते हैं तो कंजूसी के साथ करते हैं. They are lazy to even smile भी करेंगे तो थोड़ा सा स्माइल करेंगे. Emotionally being not lazy or emotionally maintaining your dynamism, for me personally, I feel it is all about maintaining the same level of excitement, same level of enthusiasm, same level of motivation in every act that we do. And if we can master that, the emotional energy of everything that you do, that really raises high, and it brings a lot of dynamic energy into whatever activity you're doing. You could be an instructor, you could be into business, you could be a homemaker. हम लोग सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हर समय हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. Now, let me talk about the third type of laziness, and this again is extremely common. And once we finish discussing all these three, please reflect कि आपके अंदर कौन सी लेजीनेस ज़्यादा है, और हो सकता है कि उसी लेजीनेस, वो एक लेजीनेस की वजह से you are not getting the desired results, or the desired hitting of targets is not happening because of that lack, क्योंकि वो एक एनर्जी का lack है. So the third one, we call it mental laziness. Now what is mental laziness? Now to explain mental laziness, I will just narrate a short story here. एक छोटा सा स्टोरी के साथ समझते हैं इसको. So there was once a woodcutter जो लकड़ी काटता है. And जो woodcutter था बहुत मेहनत करता था, दिन भर लकड़ियाँ काटता था. So does this woodcutter have physical laziness? No.
दिन भर तो वो मेहनत कर रहा है, दिन भर लकड़ियाँ काट रहा है, जंगल में घूम रहा है. इट इज़ नॉट ईजी. It is much more physical labor than what we would do in our lives. But how come we are earning more or we are financially doing better than a simple woodcutter? So, once what happened is there was this woodcutter जो दिन भर बहुत मेहनत करता था और लकड़ियाँ काटता था. तो एक दिन एक इंसान है, उसने उसको देखा एंड ही फेल्ट, उसको उस पर बहुत दया आ गई, फेल्ट वेरी मर्सी, फेल्ट लॉट ऑफ मर्सी फॉर एंड कंपैशन फॉर दिस पर्सन. और उसने सोचा कि इतनी मेहनत करता है, दिन भर लकड़ियाँ काटता है फैमिली के लिए, इसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है टू अर्न अ लिविंग. So this guy, out of compassion, what he did, he gifted a wood cutting machine to this woodcutter. ये सोच के कि अगर ये मशीन इस्तेमाल करेगा तो जितनी लकड़ियाँ ये एक महीने में काटता है उतनी ही लकड़ियाँ वो एक दिन में काट सकेगा, एंड देन दैट पर्सन कैन लीड अ मोर कंफर्टेबल लाइफ एंड डज नॉट हैव टू स्ट्रगल एवरी डे एंड डू सो मच ऑफ फिजिकल लेबर. तो उसने कुछ इस तरह से सोचा एंड उसने एक लकड़ी काटने की मशीन उस वुड कटर को गिफ्ट कर दी. वुड कटर बहुत खुश हुआ कि मुझे तो मशीन मिल गई है और अब मैं इसे इस्तेमाल करूँगा. तो उसने तो एक सपना देखा कि हाँ, मेरे साथ तो ऐसा होगा वैसा होगा, और वो बहुत खुश हुआ. बट guess what happened next day? Next day morning he got up, and when he got up he looked at the machine. He somehow just looked at it, और फिर से उसने अपनी जो एक्स होती है, द एक्स विच वी यूज टू कट द ट्रीज, सो व्हाट ही डिड इज उसने अपनी एक्स उठाई और फिर से जंगल में चल पड़ा. जब वो जंगल में चल पड़ा, दिस गाय हु हैड गिफ्टेड हिम द वुड कटिंग मशीन, वो वहाँ पर उससे मिला एंड ही वाज शॉक्ड. उसने सोचा कि अरे मैंने आपको मशीन दी है. तो उसने जाकर के उससे बात की कि मैंने तो आपको मशीन दी थी, व्हाई आर यू नॉट यूजिंग दैट मशीन, व्हाई आर यू स्टिल यूजिंग दैट एक्स. एंड दिस गाय वाज रियली शॉक्ड. तो वुड कटर ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन अभी वो चलाना हम सीखे नहीं हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज द वुड कटर हैड द मशीन, लेकिन देयर वाज मेंटल लेजीनेस कि अरे ये मशीन अब मुझे चलाना सीखना पड़ेगा, मुझे थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा. और वो दिमाग लगाने में लेजीनेस है, लेकिन फिजिकल लेजीनेस नहीं है. इसलिए क्या करो, दिमाग को साइड करो, pick up the axe and go and cut the trees. Again, this example, by the way, is not just for the woodcutter. We all do this a lot in our life also. Like for example, we see it even in pranic healing, in the school that we are in. बहुत बार ऐसे होता है कि we are all blessed with lot of techniques, lot of psychotherapy techniques, financial healing techniques, many things. Techniques सुन के हमको बहुत अच्छा लगता है, we feel very empowered. But when we go home, and because we have not yet mastered the technique, थोड़ा बुक खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, which is not so difficult also by the way, करना पड़ेगा. इस चक्कर में we tend to procrastinate, we get lazy. अच्छा आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे. ये करते 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 वो जो टेक्निक जिससे हमारी लाइफ ईजी हो सकती है, बिकॉज ऑफ आवर ओन मेंटल लेजीनेस वी डोंट टेक दैट शॉर्टकट एंड वी आर ओके to continue to do physical labor. We are okay to suffer, we are okay to do those things, but we are not okay to apply new techniques. Like even for example the whole world of technology. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अपग्रेड कर लिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते. जैसे कोई एक नया गैजेट भी आपके पास आ गया, आपको पता है कि इससे आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. अरे ये तो मेरे को समझ में नहीं आता, ये तो मेरे से होगा नहीं, फॉरगेट अबाउट इट, हम अपना पुराना स्टाइल से ही काम करेंगे. सो समटाइम्स वी डोंट वांट टू एम्ब्रेस चेंजेस. वाई? बिकॉज ऑफ मेंटल लेजीनेस. वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट चेंजेस बिकॉज वो चेंज लाने के लिए फिजिकल लेजीनेस नहीं है, मेंटल लेजीनेस है. मेंटल लेजीनेस क्यों है? क्योंकि हमको अपनी सोचने का तरीका अपना बदलना पड़ेगा. वी विल हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, वी विल हैव टू स्ट्रेच आवर ब्रेन्स, वी विल हैव टू think differently. We cannot think in the same way the way we were thinking. तो इतना कौन सोचेगा? Forget about it. Let me just pick up my axe and go back to my old methods. So this is an example of mental laziness where we don't want to adapt to new changes. We don't want to adapt to new circumstances. We don't want to adapt to new discoveries, new inventions. But we are okay to continue with our old methods which are slow,
Why? Because we are comfortable doing physical labor, but we are not comfortable doing mental labor. So mental labor, emotional labor, physical labor, तीनों ज़रूरी है. And we need to overcome our laziness. And this is one energy. If we can overcome, अगर हम लोग अपनी mental laziness हटा दें, emotional laziness हटा दें, और physical laziness हटा दें, then we become super dynamic, and we can actually become unstoppable in whatever field we are, because this energy is what really pulls us down. This is one of the most common weaknesses. बहुत सारे talented लोग, intelligent लोग पीछे रह जाते हैं कभी कभी. क्यों? क्योंकि हो सकता है physical laziness है. बहुत सारे फिजिकली वेरी एक्टिव एंड डायनामिक पीपल वो भी पीछे रह जाते हैं कभी कभी. क्यों? क्योंकि इट इज़ पॉसिबल दैट दे हैव इमोशनल लेजीनेस, दे गेट बोर्ड वेरी इजीली. इट ऑफन हैपन्स, आई हैव सीन स्पेशली विद इंटेलिजेंट पीपल. कभी कुछ किया तो कभी फिर कुछ और किया, देन दे गेट डिस्ट्रैक्टेड समथिंग एल्स, कभी कुछ और करने का मन करता है. सो क्या होता है कि बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, दे वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, सो माइंड इज़ वेरी एक्टिव, बट इमोशनली दे गेट बोर्ड वेरी इजीली. इसीलिए दे कीप चेंजिंग देयर प्रोफेशंस, they keep changing their lifestyles. Why? Because psychologically, emotionally, they don't feel motivated enough. This is one point of emotional laziness, that you're lazy, you don't want to upgrade your emotions. एक level पर आकर के बोरियत होने लगती है, then you again go back, try something new, then again reach there. लेकिन जब भी आप कितना बार आप नया चीज़ करेंगे, जब तक पुराने चीज़ को अपग्रेड नहीं करते जाएंगे, तब तक we will not grow and we will not be able to build something large. So, before we close, let us do a short prayer and let us do some affirmations. Now, I just want you all to think. You can pause the video. वीडियो पॉज करके ये सोच के देखिए कि आप कौन से लेजीनेस से गुजर रहे हैं. What is your weakness? Is it physical laziness? Is it emotional laziness? Or is it mental laziness? What is your self-talk? क्या आपका बॉडी मूव नहीं करता है? That is physical laziness. क्या आप इमोशनली बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं या डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, या आप इंटरेस्ट बहुत जल्दी खो देते हैं? दैट इज़ इमोशनल लेजीनेस. जहाँ पर भी थोड़ा सा माइंड को स्ट्रेच करना पड़ता है या चेंजेस आते हैं, और जब चेंजेस आते हैं तो फिर से यू हैव टू रीफॉर्मुलेट योर स्ट्रैटेजीज, यू हैव टू फाइंड अनदर वे टू डू थिंग्स. जब ऐसी सिचुएशंस आती है एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू सिस्टम्स, न्यू प्रोसेसेस, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, then that is mental laziness, and we cannot survive with any type of laziness. तीनों laziness को हमको दूर करना है. So just pause the video for a moment and just think. During this video you might have got thoughts. Just reflect that which is your kind of laziness. Alright, and then we will just close with a short prayer, and if you like you can use this prayer, and which can help you to come out of the laziness. Right? So just close your eyes, keep your palms open, take a deep breath. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all the great ones, Holy Gurus, Holy Masters, thank you for blessing me with dynamism on all levels, physical level, emotional level, and mental level. Thank you, God, for blessing me with the willpower to overcome laziness, all three types of laziness. Thank you for blessing me with the willpower to overcome physical laziness, emotional laziness, and mental laziness. Thank you, God, for blessing me with the inner strength, with inner dynamism, with inner industriousness. Thank you. In full faith, so be it. Gently open your eyes with a big smile. Thank you very much for watching. Do leave us a review, and continue to watch videos, lots of videos on Life Simplified, and stay motivated and stay happy. Thank you.